Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had recited and explained the poem The Coming of Spring, and I had explained and written exercise A of comprehension. And students, today I'm going to continue with exercise B of comprehension of poem 1, The Coming of Spring. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 21. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 21. Poem 1, The Coming of Spring. Students, first of all, I'll be reciting the poem to you, revising the word meaning and the meaning of phrase, and also the exercise A. Then I'll be continuing with the exercise B of comprehension. So, please listen to me as I recite poem 1, The Coming of Spring by Sanchit Saluja. How do I know that spring is here? Because the world is full of happiness and cheer. The beautiful roses, lilies, and daffodils peep out of everyone's window sills. The grass starts getting soft and green. The garden makes a very pretty scene. Tall bushes all start to unfold and introduce the sun's morning serene gold. This was the poem, children. Now let's revise the word meaning. The first word is arrival. Arrival means coming. किसी भी चीज के आने को हम arrival बोलते हैं. Then the second word is cheer. Cheer means joy, खुशी. The third word is peep. Peep means a quick look. हम झांकते हैं ना, किसी भी चीज को जब हम झांक के देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पीप कर रहे हैं. ठीक है? So peep means a quick look. Then the fourth word is sills. Sills means the edges of windows. है ना? खिड़की की जो किनारे होते हैं विंडो के, उनको हम edges बोलते हैं. Then the fifth word is pretty, and pretty means beautiful. Pretty, beautiful. Then the sixth word is unfold, and unfold means to spread out, bloom or grow. कोई भी चीज जो खिलती है ना, या हम किसी चीज को खोलते हैं, उसको हम unfold बोलते हैं. Then the seventh word is introduce. Introduce means to announce. किसी भी चीज को announce करने को हम introduce करते हैं. Then one phrase is there, and that is serene gold. And the meaning of serene gold is the golden yellow light of the sun. Now students, let's revise exercise A of comprehension. Choose the correct option to answer the following question. ठीक है, आप अपने आंसर्स टैली कीजिए कि आपने सही आंसर मार्क किया है कि नहीं. Question 1. What is the feeling in the world on the arrival of the spring season? What is the feeling of the world on the arrival of the spring season? जब spring season आता है तो world की पूरी क्या feeling होती है? The correct answer is option C, a feeling of happiness. Spring season आता है तो everywhere around there is happiness, क्योंकि बहुत गर्मी नहीं रहती है, बहुत ठंडी नहीं रहती है, and everywhere there is colors can be seen, greenery can be seen, so everybody is happiness. So the correct answer is option C, a feeling of happiness. Then question number 2. Which flowers has the poet mentioned in the poem? Poem में poet ने कौन-कौन से flowers का name mention किया है? The answer is option D. Roses, lilies, daffodils. कौन-कौन से flowers का नाम poet ने mention किया है? Option D. Roses, lilies, daffodils. Then question 3. How does the garden look during the spring season? Now, question 3. How does the garden look during the spring season? जब spring season आता है तो garden कैसा लगता है? The answer is option A, pretty. The garden looks very pretty. Garden बहुत सुंदर लगता है ना spring season में. So the answer is option A,
pretty. Then, question number 4. What does the poet mean by the phrase the sun's morning serene goal? इस phrase का क्या meaning है the sun's morning serene goal? So the answer is option B, the golden yellow light of the sun in the morning. जो phrase है sun's morning serene goal, इसका क्या meaning है? The golden yellow light of the sun in the morning. सूरज जब spring season में morning में निकलता है तो उसकी एकदम golden yellow light चारों तरफ बिखेरता है. And that look, जो वो हमको जो नज़ारा दिखता है, जो सीन दिखता है, that is serene gold. क्योंकि सन की वो जो चमकीली सुनहरी रोशनी है सब चीज़ों पे मॉर्निंग में दिखती है. And that is very soothing to the eyes. So the correct answer is option B, the golden yellow light of the sun in the morning. उसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन लिखवाया था. Who has composed the poem? Who has composed the poem The Coming of Spring? And what is the answer? The answer is Sanchit Saluja. Fine. Now let's start with exercise B. Exercise B of comprehension. That is answer the following questions. All of you please take out your notebook, students. I hope सारे बच्चों ने poem लिखी है notebook में. Wow words, word meaning, meaning of phrases in exercise A. Exercise A के बाद अब हमको exercise B भी notebook में लिखनी है. So give the heading, answer the following questions. सबने heading डाली, please write. Then we'll write the first question. And question 1 is, how does the poet know that spring has arrived? क्वेश्चन है, पोएट को कैसे पता चलता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है? हाउ डज द पोएट नो दैट द स्प्रिंग सीजन हैज अराइव्ड? सो पोएट को कैसे पता चल रहा है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है? आंसर, द पोएट, क्वेश्चन में डज है बेटा, क्वेश्चन में डज है तो हम यहाँ पे नो में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नोज. द पोएट नोज दैट स्प्रिंग has arrived. The poet knows that spring has arrived because the world is full of happiness and cheer. The answer is, the poet knows that spring has arrived because the world is full of happiness and cheer. पोएट को कैसे पता लगा कि स्प्रिंग सीजन आ गया है? क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो किससे फुल हो गया है? हैप्पीनेस एंड चीयर. राइट द स्पेलिंग ऑफ हैप्पीनेस करेक्टली. HAPPINESS. And the spelling of cheer is CHEER. Fine. So the poet knows that spring has arrived. The poet knows that spring has arrived because the world is full of happiness and cheer. पोएट को कैसे पता लगा कि स्प्रिंग आ गया है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड हैप्पीनेस और चीयर से फुल हो गया है. फाइन. नाउ लेट्स राइट
the second question. Question 2. Question 2. Draw a parting line. After each answer, please draw a parting line, students. Fine. Using a scale and pencil, please draw a parting line. Now question 2. What do the beautiful flowers do in the spring season? What do the beautiful flowers do in the spring season? जो beautiful flowers हैं वो spring season में क्या करते हैं? What do they do? The answer is the beautiful, beautiful, beautiful flowers peep out of everyone's window sills. वो सबके विंडो में से पीप करते हैं, है ना? Everyone's window sills in the spring season. Now, what do the beautiful flowers do in the spring season? The answer is the beautiful flowers peep out of everyone's window sills in the spring season. Right, fast students? Write the second answer. What do the beautiful flowers do in the spring season? Answer is the beautiful flowers peep out of everyone's window sills in the spring season. सबने लिखा? Fine. Now I'm going to revise these two and then I'm going to erase the board. So write fast. Question 1. How does the poet know that spring season has arrived? The answer is the poet knows that spring season has arrived because the world is full of happiness and cheer. Question 2. What do the beautiful flowers do in the spring season? The answer is the beautiful flowers peep out of everyone's. यहाँ पे आप ध्यान से देखो, everyone's में apostrophe s लगा है, so आप भी apostrophe s लगाएंगे. Everyone's window sills in the spring season. At the end, put a full stop. Fine. You must begin an answer with a capital letter and end with a full stop. These things have to be kept in mind कि आपको capital letter से sentence start करना और end किससे करना है? Full stop से. Fine. I hope सबने लिख लिया है. So now I'm going to erase this and write the third question. Now, question number 3. What happens to the grass? What happens to the grass on the arrival of the spring season? Question number 3 is,
What happens to the grass on the arrival of the spring season? जब spring season आता है तो grass का क्या होता है? grass को क्या होता है? So the answer is on O capital, on the arrival of the spring season, on the arrival of the spring season, the grass जानते हैं ना, घास को बोलते हैं, the grass starts getting soft and green. On the arrival of the spring season, the grass starts getting soft and green. Write first, then I'll erase and write the fourth question, students. What happens to the grass on the arrival of the spring season? Spring आता है तो घास कैसी हो जाती है? So on the arrival मतलब आना, coming. On the coming of spring season, the grass starts getting soft and green. घास और soft और green हो जाती है. Fine. I hope everybody has written. So now I'm going to erase this. I hope everybody has written. On the arrival of the spring season, the grass starts getting soft and green. So now I'm going to erase this and write the fourth question. Now, question number 4. How do the tall bushes spread out? How do the tall bushes announce the arrival? How do the tall bushes announce the arrival of the spring season? Now, how do the tall bushes announce the arrival of spring season? जो लंबी लंबी bushes हैं, bushes जानते हो ना, झाड़ियों को बोलते हैं, वो कैसे अनाउंस करती हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया है? वो क्या करती हैं? सो हमने क्या पढ़ा है पोयम में? दे स्प्रेड आउट, वो बड़ी होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग, है ना, and they grow and announce that spring season is there. So the answer will be the tall bushes, है ना, bushes झाड़ियां, है ना, ट्री तो पेड़ होते हैं, bushes क्या होती है बेटा? झाड़ियां. So the tall bushes spread out, वो बढ़ने लगती हैं, फैलने लगती हैं, नई ब्रांचेस, नई शूट्स उनमें आने लगती हैं. So they spread out and bloom,
और खिलने लगते हैं, उनमें बाहर आने लगती हैं, फूलों की बाहर। ब्लूम मतलब उनमें फूल खिलने लगते हैं। एंड ब्लूम विथ फ्लावर्स, नई उनमें शूट्स आने लगती हैं, उनमें फूल खिलने लगते हैं। टू अनाउंस, अनाउंस करना मतलब इंट्रोड्यूस करना, सबको बताना कि कौन सा सीजन आ गया है, स्प्रिंग सीजन। अनाउंस द अराइवल, announce the arrival of the spring season. Now, actually what happens students? क्या होता है जब स्प्रिंग सीजन से पहले विंटर्स होता है। आपने देखा है ना, विंटर्स में सारी चीजों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती, कोई भी चीज जल्दी नहीं बड़ी होती है। अगर आप कुछ नहीं तो अपने नेल्स भी देखो, आपके नेल्स जो है रेनी सीजन और समर्स में जल्दी ग्रो करते हैं, यू नीड टू ट्रिम देम, है ना। सेम वे आप ये जो बुशेस हैं ये भी विंटर्स में सबकी ग्रोथ रुक जाती है, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है उनको सनलाइट मिलती है ना। सो व्हाट हैपेंस, वो जल्दी उनमें नई शूट्स आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, सनलाइट मिलते ही बाहर आने लगती है ना। फूल से जो बुशेस है वो लग जाती हैं, और जब पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, है ना, पेड़ बढ़ने लगते हैं, तो ये सारी चीजें क्या सिंबलाइज करती है, अनाउंस करती है कि अब विंटर्स खत्म हो गया, कौन सा सीजन आ गया, स्प्रिंग सीजन। सो how do the tall bushes announce the arrival of the spring season? कि जो tall bushes है ये कैसे अनाउंस करती हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया है? So the answer is the tall bushes, bushes, spread out मतलब वो फैलने लगती, फैलने लगना, कैसे फैलना, उनमें नई शूट्स आने लगती हैं, नई डालियां आने लगती हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं, पेड़ ग्रो करने लगता है ना। सो टॉल बुशेस स्प्रेड आउट एंड ब्लूम विथ फ्लावर्स, और उन डालियों पे फूलों की बाहर आ जाती है, ये बताने के लिए कि कौन सा सीजन आ गया है, स्प्रिंग सीजन। टू अनाउंस, अनाउंस करना, इंट्रोड्यूस करना। आपने देखा है ना, स्कूल में असेंबली में कुछ कुछ अनाउंस किया जाता है बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। तो सेम वे ये फ्लावर्स जो है पेड़ों के ऊपर और स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, जो उनकी शूट्स वगैरह निकलती है, ये सब क्या अनाउंस करते हैं कि कौन सा सीजन आ गया, स्प्रिंग सीजन। सो नाउ आई रिवाइज question 4 and answer, and then I'm going to erase. Question 4th. How do the tall bushes announce the arrival of the spring season? So the answer is the tall bushes spread out and bloom with flowers to announce the arrival of the spring season. Students, please write the spellings correctly. The spelling of spread is S-P-R-E-A-D, S-P-R-E-A-D, spread, B-L-O-O-M, bloom, announce, A-N-N-O-U-N-C, announce, arrival, A-R-R-I-V-A-L, arrival, and spring season, all of you know. Please write these spellings correctly. Fine. I hope everybody has written. So now once again I'm going to read it and then I'm going to erase it. Question 4. How do the tall bushes announce the arrival of the spring season? Answer is the tall bushes spread out and bloom with flowers to announce the arrival of the spring season. Fine. Now I'm going to erase this, and then there's one more question given in the literary appreciation. अभी एक question और है literary appreciation का, that I'm going to do. And the question is,
the question is, what all can you what all can you imagine? इमेजिन करना मतलब मन में सोचना. In a beautiful garden. Now, आप अगर बुक में पेज नंबर 23 में देखोगे, the poet has used different words like roses, lilies, etc. है ना. पोएट ने इस पोएम में बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं, roses, lilies, etc. Now, that can you imagine in a beautiful garden in a spring season, है ना. आप जो स्प्रिंग सीजन में इमेजिन कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, वो आपको लिखनी है कि स्प्रिंग सीजन में आप गार्डन में, एक ब्यूटीफुल गार्डन में आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो. Now, we'll write the answer. स्प्रिंग सीजन, ब्यूटीफुल गार्डन जनरली किस सीजन में होता है? स्प्रिंग सीजन में. सो इन अ ब्यूटीफुल garden, I can imagine. क्या क्या आप इमेजिन कर सकते हो? Lot of tall trees and bushes laden means लदे हुए, laden with flowers and fruits. In a beautiful garden, I can imagine lot of tall trees and bushes laden with flowers and fruits. Then, what else? Soft and green grass. Then, variety of flowers like roses, dahlia, lilies, marigold, sunflower, roses, dahlia, lilies, marigold, sunflower, etc.
chirping birds, chirping birds, beautiful butterflies. I'll write over here. Beautiful butterflies. B-E-A-U. Beautiful butterflies. And bright sun. Yeah. So I have written the answer. In a beautiful garden, I can imagine a lot of tall trees and bushes laden with flowers and fruits, soft and green grass, comma, variety of flowers like roses, dahlia, lilies, marigold, sunflowers, etc., chirping birds, beautiful butterflies and bright sun. Fine. आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, जो भी सोच सकते हो, आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो जो आप गार्डन में देख सकते हो. फाइन. So that's all for today, students. I hope everybody has written all these 5 question and answers that I have done today. So that's all for today. Please do learn and revise the taught exercises. Thank you, students. Have a good day ahead.